Hare Krishna. I welcome all of you for this fifth and last session of our Basics of Spirituality course. And this course is meant for all teachers and counselors to help their students or their clients or themselves to practice their counseling based on spiritual principles. Okay, so our today's topic will be meditation and mindfulness. ओके मेडिटेशन एक चीज है और माइंडफुलनेस एक चीज है सो इफ यू just try to think about what these things are, what is actually meditation and what is mindfulness. So meditation is something which brings us to singular thoughts. हमें सिंगुलर थॉट पे लाने वाला उसको हम बोलेंगे मेडिटेशन. ठीक है, एक थॉट के ऊपर. जैसे हम अलग अलग बहुत सारी चीजों में हमारा मन को बहुत सारी चीजों में भटका कर रखते हैं, बहुत सारी चीजों में हम अपने माइंड को डालते हैं. उन सारी चीजों से उसको लाकर अगर एक चीज पर फोकस करना है और उस एक थॉट एक चीज पे अगर हम लोग है और उसमें हम क्या करते हैं, इफ यू ट्राई टू go into the main stream of one thing, whatever we decide to be. Okay, so we can call it as meditation. But then mindfulness क्या है? Sometimes we see that mindfulness and meditation, both words are interchangeably used. इसके मेडिटेशन की जगह पे माइंडफुलनेस यूज होता है, माइंडफुलनेस की जगह पर मेडिटेशन यूज होता है. बट माइंडफुलनेस इज समथिंग which is more about awareness. आप अभी करंटली इस जगह पर हो, इसे बोलेंगे हम अवेयरनेस. ओके, सो टू अंडरस्टैंड माइंडफुलनेस विल डू एन एक्सरसाइज. ओके, तो वो एक्सरसाइज करने से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा एग्जैक्टली माइंडफुलनेस क्या है. ओके, सो फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ओके, टू जस्ट सिट स्ट्रेट. ठीक है, विल डू जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज. इसको माइंडफुलनेस एक्सरसाइज बोलते हैं, which is also sometimes considered as meditation. ठीक है, कभी कभी इसको भी एक मेडिटेशन बोला जाता है, but then it is mindfulness exercise to be aware of current situation. ठीक है, so let us begin. First of all, I would request all of you to be comfortable in whatever place you are. जो position पे आप comfortable है, try to become comfortable in the position you are. Okay, and now when you are ready, gently close your eyes. Close your eyes and tune inwards. Notice your body. Tune in to the weight of gravity. Discover the points of contact between you and the surface you have rested. What else do you notice? Keep your eyes closed. What is it like to be in your body now? Just accept and allow whatever you notice. Don't harbor any judgment. Harbor no judgment. Don't judge anything. Just be mindful. Noticing what is the sense of compassion in your heart. Try to let everything go. Let everything be as it is. Don't harbor any judgment. Now continue to do this with your breath and body. Tune in to the sensation of your body. Just observe, accept, and allow. Whatever thoughts may come, don't judge them. Don't cling to them. Just let everything as how it is. Stay mindful of your breath
and body with sense of compassion in heart. Observe how air enters into your nostrils and enters into your lungs. Eyes closed. Now let us allow our awareness to expand around you. Expand your awareness around you. Feel the air around you. Feel the objects around you. Just allow them as they are. There is nothing to do, there is nothing to judge. If your mind wanders, it's completely okay. Don't judge it. Just return your focus to what is. Being connected to your breath, being connected to your body, and your sense of presence in the world around you. Let everything simply be, including yourself. Beginning to let your attention travel back, become more aware of physical sensation by gently rolling your shoulders, moving your fingers, toes, still being mindful. Taking this awareness back with you, slowly rub your palms, keep them over your eyes, open your eyes inside them, and come back to the world. Okay. So this was, I hope all of you did it, and I hope you became more aware of your presence in the world, more aware of yourselves. So how many of you liked this simple mindfulness meditation? Please write in the chat box. How was it? How was the experience? Yes, I'm waiting. I feel all of you are typing. Was it good? Okay. Thank you, Lida madam. Okay, good. Thank you, Ajay sir. Yes, it was good. Okay, little fast. Thank you, Sheetal ma'am. Okay, so this was a simple meditation, mindfulness meditation, what we did currently. So आपने अगर notice किया होगा, what we try to do is we try to come back to the current place what we are here. Because mind, the nature of mind is mind runs in all different things. If you want to study, like for example, sometimes students, they have a book in front of them and they sit for 2 hours, but in 2 hours, they are on the same page. That means they are not there. They are at somebody at some other place. So if somebody practices this mindfulness meditation daily or any type of meditation which actually helps person to come down to singular thoughts. मेडिटेशन आपको एक थॉट पे एक जगह पे लाने के लिए अगर फोकस करता है मेडिटेशन तो आप योर सेंटर और योर फोकस ऑफ मेडिटेशन कैन बी डिफरेंट बट देन लास्ट में क्या होता है
everything is brought to one, and the mind and everything focuses on only one thing. That can be called as meditation. Okay, so then if we just see how meditation helps, so currently if we see, meditation has become a mainstream trend currently. Many people are doing courses in meditation. Even I myself also did. Okay, they are some are becoming meditation trainers, and some are uh, actually finding out new ways of meditation. I can give you 20 to 30 different types of meditation names. Okay, from which there are different branches also arising. People are studying so much on meditation. But then if you want to practice meditation in your personal life, you have to minimum give 8 weeks. This is a standard study which people have done. 8 weeks minimum you have to do. Eight week means it is like approximately 2 months. You have to give 2 months to see the benefits or to see the changes in yourself if you do meditation. Or if you ask any student also to do, at least 8 weeks is the time which we should do, and that also daily we have to give some time for that. It is not that we do one day and 2 days we don't do, after that again one day we do. No. So what are the benefits of meditation? If we see, so meditation is seen to reduce stress. There are hormones called as cortisol hormones. Okay, so these cortisol hormones, they increase. If somebody is doing meditation, and then thus, uh, actually, sorry, stress increases those cortisol hormones, and meditation reduces it. That is what is there. Cortisol hormone, it increases the inflammation in the body, changes the sleep cycle, increase blood pressure. All those things happen because of that hormone. That is what we call as stress. But then meditation helps to reduce that. Scientifically proven. Okay. Then in students, especially when we see the attention span of students, that is very less. It is said that in class, if we keep class of 40 to 45 minutes, why it is that? That is the standard time students can actually pay attention. If it is more, then it is difficult for them to pay attention in class. Okay. And actually, if we see what is the exact standard time a child or a person can meditate or focus on one thing, it is very, very, very less. It is very less. It is said even if somebody can focus on for 12 minutes also, that is very high. So you can just imagine how less the attention span of people is. So what meditation does is it reverses the pattern in the brain that contribute to mind wandering. Mind wanders at different places, worry करता है mind, attention थोड़ा कम होता है, तो meditation उसको भी help करता है कम करने में. If somebody is addicted, तो उसके addiction को कम करने के लिए meditation help करता है by bringing mental discipline. Because what we do is, in meditation we try to control our mind. देर इज अ मेडिटेशन कॉल्ड एज त्राटका मेडिटेशन. आपने अगर सुना होगा, तो एक चीज पे फोकस करना. लाइक फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, आप कैंडल कैंडल गेजिंग मेडिटेशन एक होता है. तो मैं अभी जैसे वी हैव अ सेपरेट कोर्स आल्सो. आई विल बी डूइंग अ सेपरेट कोर्स ऑन मेडिटेशन व्हिच विल बी लाइक फॉर 3-4 sessions together. Every point, every different meditation, we'll practice also those meditation, right from antarmona meditation, chakra meditation, so different types of meditation. So I'm giving small examples of meditation just here, because in this one session we are just going to understand overview what are the benefits of meditation and how we can implement in our daily life. So candle gazing meditation, this is the simplest meditation. What we can do is we can just switch off all the lights in the room. We can keep a candle. No windows should be open. No air circulation should be there. Fan off, sub off. And then you keep a candle. That candle, lighted candle will be there, and it should not waver. Waver नहीं होना चाहिए, एकदम perfect position. And then we sit with a distance of like around one hand, and then we look at that flame. Okay, we look at the flame without blinking eyes. Okay, and then when we go on looking for some time, what happens actually is we know that thoughts are coming. Mind sends the thoughts, and our mind starts to wander. अभी इतना इधर उधर mind भाग रहा है, thought ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है. But then हम हमें एक्शन नहीं चेंज कर रहे. हम अपने आप को वहीं पर रख रहे हैं. हम खुद का जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर रहे. सो व्हाट हैपेंस इज, माइंड हैज टू कम टू दैट फ्लेम. उसके ऊपर आना पड़ेगा, इधर उधर नहीं भाग सकता.
And then even if it runs, because we are focusing on one thing, हमने क्या किया है, it's like हमने किसी गाय को या किसी बंदर को या फिर कुत्ता डॉग को हमने रस्सी बांध कर एक जगह पे उसको बांध दिया, वो भाग नहीं सकता ज्यादा। तो माइंड को वैसे ही हमने हुक कर दिया माइंड को एक जगह पर, वो कैंडल के फ्लेम के ऊपर। एंड देन हमें पहली बार दूसरी बार जैसे हम बार 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 करते हैं, हमें समझता है, वी अंडरस्टैंड दैट माइंड ब्रिंग्स थॉट्स। थॉट्स आते हैं माइंड के, वो थॉट्स आकर सामने से जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। वी लर्न टू अंडरस्टैंड, टू लेट गो द थॉट्स। दैट्स व्हाई इन द meditation what we did, practical meditation, I was discussing about, I was telling, don't harbor any judgment, you know? If we harbor judgment, that means we are clinging to the thought। थॉट आया और हमने उसको क्लीन किया। थॉट क्या आया? अरे माय फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या अरे नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, और उसे आपने उसको क्लीन कर लिया। फिर आपके दिमाग में चलो, अरे अब फोन आएगा, किसी का फोन आ गया तो क्या, मम्मी का फोन आ गया तो क्या बोलूंगा मम्मी को, और ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। लाइक दैट हमने क्या किया, हमने उस थॉट को क्लीन कर लिया। दैट इज आवर प्रॉब्लम, दैट इज आवर मिस्टेक। सो थॉट्स विल कम, बट देन वी अलाउ द थॉट्स टू गो, we don't cling to them। That is what helps us, this discipline helps us to make mind more calm and focus, or increase the attention span, what we are discussing about। in addiction also, पर्सन का जो डिपेंडेंसी है ना एडिक्शन के ऊपर, वो कम होता है, क्योंकि मेंटल अवेयरनेस आता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम करंट जो प्लेस है या करंट जो एक्टिविटी है उसी पर फोकस नहीं कर सकते। आवर माइंड इज ट्रैवलिंग इन ऑल डिफरेंट प्लेसेस, एंड वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द करंट थिंग व्हाट वी आर डूइंग। Our generation currently is so much distracted। It is said guided missiles but misguided men, we have guided missiles but we have misguided men, distracted men we can say here। even if we are talking to somebody, people have mobile like this, they talk and they see in mobile, okay I am talking to somebody, अच्छा हाँ हो गया, ऐसा हो गया, this happened here, okay okay great, हाँ अच्छा हाँ okay ऐसा हो गया, and then again mobile। the person is cultivating distraction in his life। he himself is calling for distraction if he does two things। I like a sage, he was asked, do we need to do some meditations for what type of meditation we need to do to increase concentration? And what he said was wonderful, I liked it। he said, you don't need to do big meditation or big different difficult techniques। a simple thing you can do is, even if you are talking to somebody, do only one thing at a time। if you are talking to somebody, only talk with him। if you are listening, only listen, only listen। then don't see who is going behind and what is happening up and building is falling down, earthquake। if you are focused, then only one thing you should do। there is an example of a person which comes, that once there was an arrow maker, he was making arrow, and he was making arrow, and in India आप सबको पता होगा, शादी का जो बारात निकलता है ना, वो बारात बाजू से जा रहा था, प्रोसेशन, ठीक है, मैरिज का प्रोसेशन, वो जा रहा था। एंड दैट प्रोसेशन वेंट अवे, एंड दिस पर्सन वाज फोकसिंग ऑन मेकिंग दैट एरो। वो एरो बना रहा था, ब्लैक स्मिथ या जो भी होगा, है ना। सो one person, he came after some time, and actually he missed the marriage ceremony। and then he came and he was searching where the ceremony went, and then he came to this arrow maker and said, भैया भैया आपने वो मैरिज प्रोसेशन को देखा क्या? arrow maker was focused on doing his work। so this person came and shook him up, भैया आपने देखा क्या? he said, oh क्या हुआ, अच्छा okay what happened? like मैरिज प्रोसेशन गया, मैरिज प्रोसेशन मैंने नोटिस नहीं किया, कब गया? this was the focus of that person, so if we do one thing, like if when we are talking we only talk, when we are hearing we only hear, when we are eating we only eat। that's why for students, for parenting, a very important point, that when parents and children, when they are having their dinner, especially in the night, they should not have TV on। बिकॉज हम जब खाना खाते हैं और टीवी भी देख रहे हैं, ये दोनों चीजें साथ में नहीं होनी चाहिए, अपना फोकस खाने पर होना चाहिए। आई रिमेम्बर वन सेंट आई मेट इन वृंदावन, वी वर सिटिंग इन लाइक, वो पंगत होता है ना, बैठे सब लोग लाइन से बैठे, हम लोग बैठे थे, एंड देन ही वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड मी एंड ही वाज फोकस्ड ऑन ईटिंग। आई जस्ट आस्क्ड हिम, सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 1 minute? so he looked at me and then he said like that, no please, just after I eat we will talk।
So I was shocked that why he said no to me. Okay, I was thinking like that. But then as soon as his dinner or lunch was done, and then he came to me and then said sorry, but then I was eating, and I was eating Krishna Prasad. He said, offering or the food offered to God. And he said, I consider this food non-different than God. And then when I am spending my time with God, I will not. It is not good that I talk with somebody else. I like that thing very much. I was, amazed and I was impressed by that kind of mindset. That he was focused on eating. Whatever his mindset was, that it was Krishna. It was the food itself is spiritual. God's, God's presence in the food. We can say he was looking in that way. Similarly, if we see all different traditions, they have, all different religions, they have some processes in which they pray, in which they chant the names of God. They have beads, they have beads of different kinds, whatever they call it. There are glass beads, there are Rudraksha beads, there are Tulsi beads, all different kinds of beads people have. So they try to focus. Why beads? Because if you chant on beads, then what happens? Your focus is on only on mantra. Your focus is not on counting how many beats, how many mantras have been done. And then there are some other aspects also, that there are some points, acupressure points here. If you have the bead here in your hand, then it helps in concentration. Again, to help concentrate, there are some mudras also. There is a special session we have on mudra also. One mudra, this is the mudra, this is called as Jnana mudra. This Jnana mudra again helps us to concentrate on one thing. Now you may say how? So there is a science behind that. There is prana energy within our body, and that energy flows, and whatever extremities are there, the energy comes out from that. So that prana energy, if we close here, what point we close, accordingly the prana energy, it reverses itself and it goes back, and it makes certain kind of movement within our body. So if you do this kind of movement, it helps us to concentrate. You can see when you are speaking something which is very focused, concentrate. If you do like this or if you do like this, that will help you to concentrate more. Then there is Dhyana Mudra, which is like you place one hand over other and then thumbs are joined like this. This is Dhyana Mudra, and you keep it just on your thighs, or you can say just below your stomach, below your belly. Just you keep it. That this is called as Dhyana Mudra. So when you do Dhyan, focus on something, this helps a lot. So Jnana Mudra and Dhyana Mudra, these two mudras especially, they help in meditation a lot. And if you try to do these two mudras daily during meditation, having this mudra or this mudra, unless you are chanting on beads. If you are chanting on beads and doing meditation, then one hand can be kept like this. There is another one mudra which I learned, that also I like very much. This mudra, I am not remembering it. Maybe it is Pran mudra or something. This mudra, just you join like this, this mudra. So this mudra also is a very powerful mudra. This is like a next level focus when we are doing something spiritual. And then some people they do like this, and some people they do like this. These are the two ways. If you do like this, it's like you are asking for some spiritual intervention or spiritual realizations. When you are doing meditations of this kind of higher level meditations, spiritual meditations, and when you are doing meditations wherein you want to focus yourself internally, then you do this and this. I hope you are getting. So these are the types of mudras which we do during meditation. So meditation helps at different level to people. If you know about biology or our brain structure, there are certain type of part in the brain which we call, there is a part called as limbic system of brain. It is called as the emotional part of brain, okay, which contains neurons, and those neurons they make some structures, and those structures they are very important. Two structures especially we'll discuss here: hippocampus and amygdala. These two are specifically impacted more by meditation. Hippocampus, if we see, the basic function of hippocampus is to convert the thing, the memory, short-term memory into long-term memory, or we can say it controls learning and memory, which is very important for students, correct?
So meditation helps in that. Brain scan of those people who have done meditation, it says that somebody who is doing meditation, the size of hippocampus increases. Can you imagine? And the volume and density, increases. And what if it reduces? Then it is said that the person suffers from mental disorders, depression, PTSD, what we call it as post-traumatic stress disorder. All these things. If hippocampus reduces, that's why those who meditate, they are what we say more. Their memory, or we can say mentally, they are more strong. And if you see the second part, the another part, that is amygdala is also seen to be significantly increased by meditation. Okay, these are studies which are done. I am directly telling you the essence of those studies, which have been done by people who are studying meditation. They have published their research on this. So अमाइगडाला का अगर वॉल्यूम अगर छोटा हो जाता है ना, तो लोग ज्यादा डर रहे हैं, बिकॉज ये फियर वाला, स्ट्रेस वाला, एंजाइटी वाला जो पार्ट है वो अमाइगडाला का होता है. ये अमाइगडाला का साइज भी बढ़ता है, एंड दस मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट आल्सो. सो हमारे पास, हम जब काउंसलिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें समझता है कि मेन प्रॉब्लम तो यही है ना. जो हमारे पास लोग आते हैं, आइदर दे आर इन स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स है, फियर है उनको, या ऐसे कुछ चीजें हैं, तो ये सब रिमूव कर. सो इफ वी जस्ट गिव देम अ सॉल्यूशन ऑफ मेडिटेशन, डूइंग मेडिटेशन डेली, if they are doing meditation daily, you will see, like I told, 8 weeks अगर वो डेली कर रहा है, 2 months के लिए भी करता है, तो आप देखेंगे उसमें बहुत चेंज है. पेरेंट्स दे विल से, अरे सर ने बोला है इसीलिए मेरे बच्चे में चेंज आ गया. दे विल से लाइक, because actual meditation which is which works. I have given one more session on DMIT, how, how it is spiritual, and what are the important aspects when we give remedies to people. So one very important remedy there I discussed was this only, meditation. If we ask somebody to meditate, then we will see that in change happens from inside, or internal changes happen in the person. सेल्फ अवेयरनेस, आपने अगर सुना होगा इस वर्ड के बारे में, खुद के बारे में अवेयर होना. मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है. जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है ना पर्सन का, वो अगर कम होता है, तो हम बोलेंगे पर्सन का जो सेल्फ अवेयरनेस का जो लेवल है, कम होने के चांसेस ज्यादा है, कम होगा. तो अभी सेल्फ, खुद के बारे में अवेयर होना, या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना, ये इतना इजी नहीं है. आप अगर उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बच्चों का इंट्रापर्सनल कम है, वो दे दे डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस, दे डोंट नो देयर चॉइसेस प्रॉपरली, देयर डिसीजन मेकिंग इज नॉट करेक्ट, गोल ओरिएंटेड नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर सकते प्रॉपरली. ये सारा वो कम होने का, ये जो इंट्रापर्सनल या फिर सेल्फ अवेयरनेस कम होने का. एंड अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, वॉट एवर यू मे डू, कितने भी आप सोल्यूशन तो इंट्रा पे, बट सबसे ज्यादा जो वर्क करता है वो है मेडिटेशन. आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कम जिसका है, उसको आप कितने भी सॉल्यूशन दे दो, वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू चेंज, बट मेडिटेशन चेंजेस द पर्सन फ्रॉम विद इन. 100% आई विल टेल यू, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद मेनी पीपल. ये हेल्प करता है. मेडिटेशन अगर आप करते हैं, करवाते हैं उससे डेली बच्चे से, बट देन प्रॉब्लम क्या होता है, हम खुद नहीं करते मेडिटेशन, तो हम उनसे क्या करवाएंगे, बिकॉज हमने किया नहीं है. हमें पता नहीं है मेडिटेशन क्या है. फॉर मेनी पीपल मेडिटेशन इज अ वेग कंसेप्ट. बस सिर्फ बोलने के लिए मेडिटेशन, ये वर्ड पता है, बट व्हाट टू डू इन इट डेली, दैट इज नॉट क्लियर विद अस, है ना. So हम कुछ चीजें I will be discussing today, and some part we'll have in our like sessions in which we specially discuss on meditation. 2-3 sessions जहाँ पे meditation के अलग-अलग types और practical meditations भी हम लोग करके देखेंगे. Those will like that will be a separate course, meditation and mindfulness course. Okay. So going on the effect of meditation, what actually happens is, so if we the study has told that mind emits different kind of waves, or our brain emits different kind of waves. You might have heard about them, delta, theta, alpha, beta. रिसेंटली गैमा भी पता चला है, ठीक है. सो ये जो डेल्टा वेव्स है, ये क्या है, ये बहुत स्लोएस्ट ब्रेन वेव्स है, डेल्टा वेव्स. जिस समय पर्सन इज इन डीप स्लीप, वो डेल्टा वेव्स ऑलमोस्ट, उस समय ये वेव्स जब हमारे हैं, तो हमारा अवेयरनेस खुद का कुछ भी नहीं होता है. ये वेव्स होते हैं ब्रेन से जो निकलते हैं. फिर उसके बाद देखा गया थीटा वेव्स. थीटा वेव ये थोड़े स्लो है, स्लो ब्रेन है, लेकिन दीज आर लाइक, जब हम अवेक है,
बट देन वी आर फोकसिंग इंटरनली, वी कैन कॉल इट एज, जिस समय हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग, हम अंदर फोकस इंटरनली कर रहे हैं, बट देन वी आर almost like awake. That is what theta waves are there. But then उससे सबसे best waves which actually people are trying to focus by meditation or bring waves, they are alpha waves. ये बहुत relaxed phase होता है brain का, जहाँ brain alert तो होता है but actively process नहीं करता information को. जैसे आप alert है पूरा, आप है यहाँ पर, लेकिन आप process नहीं कर रहे information को, तो आप क्या कर रहे हैं? You are relaxing. समझ रहे हैं? आप बैठे हैं, आप आंखें क्लोज्ड है, आपका सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में, मेरा बिजनेस, मेरा वर्क, मेरा आज का ये करना है, इतने काउंसलिंग करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, सब कुछ चीजें सारे, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरा पैसे अटक गए, मेरा ईएमआई है, ये वो सो मेनी थिंग्स, बट देन यू आर नॉट प्रोसेसिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन, है ना? You are alert, but you are focusing internally. That is what is alpha waves, and meditation can bring you to that waves. ये mindfulness meditation है. आप अगर योग निद्रा के बारे में सुना होगा आपने, जस्ट कभी करके देखिए योग निद्रा. योग निद्रा मीन्स व्हाट? यू आर स्लीपिंग बट यू आर अलर्ट. आप सो रहे हैं मगर आप अलर्ट है, अलर्ट सो रहे. एंड इट इज सेड इफ यू डू योग निद्रा फॉर हाफ आवर, इट विल गिव यू इफेक्ट ऑफ स्लीपिंग फॉर 2 to 3 hours. That is power of yoga nidra. That will give you satisfaction. Okay. So अगर मेडिटेशन करना है तो याद रखना है आपको, अगर ये अल्फा वेव्स अगर आपको लाने हैं और उस वेव तक आपको अगर माइंडसेट आपका क्लियर करना है, तो 8 वीक्स का टाइम मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है. और मेडिटेशन अगर कोई करता है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि पर्सन को अच्छा सेल्फलेस पर्सन होना बहुत जरूरी है. अगर आपको मेडिटेशन करना है ना, आप बोलेंगे क्यों? तो अगर हम सेल्फलेस नहीं है, सेल्फिश पर्सन का माइंड कभी भी एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता. उसका माइंड हर समय कैसे मैं दूसरों से कुछ लूं, कैसे कौन सी अपॉर्चुनिटी को छीनूं, कैसे खुद सेटिस्फाइड रहूं, ये सोचने में जाता है. सो वन हैज टू बी अ गुड पर्सन विथ सेल्फलेस एटीट्यूड टू गेन or to go to higher stages of meditation. Very much important. ठीक है. And second thing is we have to bring our awareness, to the point of being soul. I am not the body, I am the soul. This knowledge also has to be there. Because अगर हम मैं ये बॉडी हूँ ये कंसिडर करते तो हम अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर सकते. Some saints, they do meditation of understanding the difference between body and soul. ज्ञान योगा का एक पार्ट है वो, कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ. And in that what they do is they close their eyes and sit and they say, I am not this brain, I am not this hand, I am not this leg, I am not this body, what I am, and then I am soul, and they try to focus internally. So मेडिटेशन के अलग अलग लेवल है. अगर आप पतंजलि योग सूत्र देखो तो उन्होंने यम नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, देर आर 8 stages which they give. पहले तो है आप कुछ नियम को फॉलो करो, फिर कुछ चीजें छोड़ो. पहले तो यम नियम यानी आप छोड़ो कुछ चीजें, फिर कुछ चीजें फॉलो करो. यानी यू शुड नॉट गो फॉर थिंग्स लाइक इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज, एडिक्शंस, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, एंड ये सब चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा आपको अगर मेडिटेशन करना है तो. ये मिनिमम है. फिर उसके बाद सब नियम, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आपको जाना पड़ेगा सेक्लूडेड प्लेस में, जहां पर कोई ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. ऐसे प्लेसेस में, शुद्ध क्लीन प्लेस में जाना पड़ेगा, है ना. ऐसे आपको मेडिटेशन अगर आपको अच्छे से करना है तो वंस यू बिकम एक्सपर्ट, देन इवन इफ यू आर सिटिंग इन ट्रेन, बट स्टिल यू कैन फोकस. बट देन हम वो एक्सपर्ट नहीं, हमें उस लेवल पे आना है तो हमें पहले ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे वो शांति है, वो फोकस है, जिसमें हम मेडिटेशन करना सीख सकते हैं. ओके. एंड देन आसन, अलग अलग प्रकार के बॉडी के जो आसन जो आजकल योगा में होता है ना, आपने देखा अलग अलग आसन, ये पतंजलि योग सूत्र में है. और वो हमें हमारे बॉडी को काम डाउन करने के लिए, अलग अलग बॉडीली पोस्चर से हम फोकस कर सके उसके लिए है. प्राणायाम जो है वो अलग अलग जो हम जो एयर को बॉडी में लेते हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो दिस इज लाइक वन वी कैन से क्लीनलीनेस ऑफ आवर लंग्स. At the same time, when we take the breath inside and out in a rhythm, so we focus on the breath, and that again helps us to meditate more, focus more, and through that we try to control the prana vayu. Okay. Prana vayu, which is surrounding the soul, prana vayu. And that prana vayu is
along with soul, when a person reaches to very high levels of meditation, then he can move them through different chakras or through different places within our body, like that. That these are very high levels of meditation, which we even should not talk about currently. We are talking about something which helps us to concentrate at one place and makes us aware of our current presence. So now question comes, क्या करें हम, क्या करें और बच्चों को क्या बताएं, करेक्ट करेक्ट. So I'm just telling you my own experience, what I did and how it helped me. Okay, I'm just telling you my own experience here. uh, if we say excellent. Okay, here if we say, you know, if you know some better meditations, surely you can go for that. I am here giving you what I experience I have with students and what I have read, I have heard, and what I personally do. I will be sharing all these kind of meditations. So first of all, first meditation which I daily make students to do is this awareness meditation, what we did at the start. Little bit faster I do because we have very less time, so I just completed in few minutes, but you can take it for 5 to 10 minutes daily. Daily focus, daily do the same meditation and ask students to be aware of their body. Or you can ask them to be aware of your brain, aware of your brain or head. We can say head, then mouth. Or you first we start with toes. Actually, we start with toes and we go up. Toes, our feet, then our calf muscles, then thighs, and then belly, and all these things. Back. Let us get relaxed. Let us become very comfortable, and let us be aware of our body. This is the basic exercise, and then let us be aware of our surroundings, expand your consciousness, focus on the breath. All these things we can do. That brings the mind on current thing. So before studies also, if they do this, they'll be able to study very nicely. अगर पढ़ाई के पहले भी एक simple meditation to come to this body. अरे यहाँ वहाँ इधर उधर का क्या सोच रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, इस बॉडी पर आ जाओ. करंट जो चालू है इस बॉडी पर आ जाओ, बस ये. फिर उसके बाद we make them chant Om. Okay, we make them chant Om, and Om should be like long Oms, chota Om hai, jaise Om, 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 Om. This is another type some people do, but then we make them chant. And Om is O, M, U, M, ऐसा Om. So when you say ma also, it should end properly. It should go longer. So like that, we make them chant Om for some time. And then I personally, I do meditation, which is mantra meditation daily. Mantra meditation is different meditation. There are meditations which are called as, I told you, candle gaze meditation, तराटका meditation बोला जाता है, या point meditation. जैसे एक बच्चा बोल रहा था, सर मैं क्लास में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ तो क्या करूँ. तो आई टोल्ड देम, क्लास में आप अगर पेपर के ऊपर एक सिंगल पॉइंट दे दीजिए, एक सिंगल पॉइंट. और जब आप टीचर जब पढ़ा रहा है तो उस समय आप क्या कीजिए, उस आपका ध्यान उधर भाग रहा है, जस्ट उस पॉइंट पे 30 सेकंड्स के लिए आप फोकस कीजिए. अगर आप रोज ये मेडिटेशन कर रहे हैं, कौन सा वाला, जो ये हम बोले ओम मेडिटेशन और ये मंत्र मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, अगर ये रोज कर रहे हैं, उसके बाद ये अगर पॉइंट पे आप फोकस करते हैं तो यू विल ब्रिंग द सेम फोकस जो आप मॉर्निंग मेडिटेशन में किया है, वो क्लास में आपका आ जाएगा. जस्ट 30 सेकंड्स एक पॉइंट के ऊपर फोकस करके, एंड फिर से दिन आप क्लास में फोकस कर सकते हैं. सो हमें माइंड को ट्रेन करना है किसी एक चीज पे आने के लिए. करेक्ट. सो अलग अलग लोग अलग अलग मेडिटेशन करते हैं. पर्सनली मैं जो मेडिटेशन करता हूँ वो मंत्र मेडिटेशन करता हूँ. उसमें आई चैंट हरे कृष्ण मंत्र, जो आपने सुना होगा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I chant this mantra, which again helps me to concentrate. You can chant any mantra which you like, जो आपने सुना है, प्रैक्टिस किया है, जो भी आप करना चाहते हो वो कीजिए. But then according to experts, I can say mantra meditation is very easy and very helpful. How it is? When you chant mantra, you are involving your two senses. Which two senses? Your lips or your mouth and your ears. You speak through your mouth and you listen through your ears. Where is the question of mind? आप क्या कर रहे हैं, आप माउथ से बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं. माइंड को आपने इस चक्कर में घुसा दिया है. आप जब बोल रहे हैं तो माइंड उस, क्योंकि कोई तो सेंस एक्टिव चाहिए तभी माइंड उस पर फोकस करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं और पीछे से कोई आवाज दे देता है आपको,
है ना, आपका नाम सपोज सुमित है, बोलते हैं सुमित, तो देन यू जस्ट लुक देयर, और आप सब कुछ भूल के आपका पूरा फोकस उस वर्ड पे हो जाता है। सो कभी कभी कुछ लोग आई हैव सीन दे डू साइलेंट मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, तो साइलेंट मेडिटेशन में आंखें बंद करते हैं और फोकस करते हैं, तो कुछ होता नहीं है, तो माइंड इधर उधर वंडर करता है बहुत अलग अलग इसमें। सम पीपल दे गो टू स्लीप आल्सो, बिकॉज फोकस के लिए कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो मेडिटेशन जो कि थॉट्स को जीरो पे लाना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन। बट देन if we shift to mantra meditation, if you just try in your life, the mantra helps you to focus on one thing. Mind को thoughts में जाने की जरूरत ही नहीं, only it has to focus on the mantra. Like for example, I am chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Or somebody may chant different mantras. Okay, different religions or different likings, whatever. I have heard about this mantra. This mantra is mentioned in Kali Santra Upanishad, and it is said, "Iti Shodashakam Namnam Kali Kalvashanashanam Nata Parata Upaya Sarva Vedeshu Dishyate." It is said that through all Vedas, one of the best mantra is this, which can help people to reduce the problems of this world, to focus. So it has spiritual benefit also, but if we see totally on the perspective of meditation, then we are focusing on something which helps us to focus our mind on one place. So आप बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं सुन रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं, यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, और ये फोकस करना बहुत इजी है। इफ आपको बोला गया कुछ भी मत सोचो या कुछ भी मत करो, वो बहुत डिफिकल्ट है, या छोटा बच्चा है, चाइल्ड ना, उसको एक जगह पे बिठाना बहुत डिफिकल्ट है। बट देन अगर आप उसको लेकर अगर वॉकिंग कर रहे हो पूरे रूम में, स्टिल इट इज ओके। स्टिल आप उससे कोई गलत चीज, सपोज वो कोई गलत चीज के पीछे भाग रहा है, वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डाल रहा है, you cannot say no 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 no, don't do, it is not the answer. By this it is very difficult by saying no to control child, but then by using something to engage, like if you give toy to the child or you take by hand and walk into your home fully, by that also you can control the child. So there is negative, there is zero, and there is positive. Negative we are not talking about. Negative is what? Our mind is into so many different types of distractions. Zero means what? Mind is not having any thought. एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट स्टेट टू अचीव। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से आपके कार के सामने कोई आ जाता है एंड यू ब्रेक, जस्ट वो थोड़े से बच जाता है एंड द पर्सन मूव्स अवे, बट देन यू आर टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम, है ना। उस समय जब आपके कार के सामने कोई पर्सन आया, उस समय आप टोटली ब्लैंक है, दैट इज व्हाट इज द स्टेट, हैविंग नो थॉट्स। एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। So when we are doing meditation and trying to come to this zero thought wala thing, it is very difficult to have that zero thought condition, because nature of our mind or nature of soul is chanchal. Mind का nature chanchal है, nature of soul is to engage into certain activities. So mind को एक जगह पे रखना बहुत difficult है, but it is very easy to give it something and then focus. जैसे मैं बोला ना, निगेटिव एक है जीरो, और तीसरा क्या है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव में रहा तो कभी भी अच्छा है। तो पॉजिटिव में क्या है, वी गिव something for the mind to engage into, and thus it remains calm. So mantra meditation is one of the best technique for that. Now if we have meditation in our daily routine, then what happens? It is like daily we are beating the mind with chappal or beating the mind with shoes, रोज के रोज, रोज के रोज। वो सीख जाता है हमारे कंट्रोल में रहना। माइंड को कंट्रोल में रखना बहुत डिफिकल्ट है। अर्जुन सेज इन भगवत गीता, चंचलम हे मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। माइंड इज सो चंचल, इट इज सो बलवत दृढ़म, वेरी पावरफुल, है ना। तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। ही सेज आई कैन कंट्रोल वायु, but I don't think I will be able to control my mind. Krishna, 6th chapter Bhagavad Gita. So Arjun is telling, फाइटर इतना पावरफुल आदमी, वो बोल रहे हैं कि मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं वायु को कंट्रोल, एयर को कंट्रोल कर लूंगा मैं। अगर आप बोलेंगे एयर को पकड़ के कंट्रोल करके रखो किसी चीज में, आई विल बी एबल टू डू इट, बट देन आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल माय माइंड। सो व्हाट कृष्णा टेल्स सॉल्यूशन? कृष्णा टेल्स, yes, Krishna agrees first of all, yes, what you are telling is correct, but then solution is abhyas and vairagya, these two things. Abhyas है, तो कौन थे, वैराग्य एंड अभ्यास, two things.
Abhyas means what? Doing same thing again and again. And vairagya means detaching ourselves or not being attached to something. ये दो चीजें. तो माइंड अगर किसी चीज से अटैच नहीं है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और एक चीज वापिस 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 अगर करते हैं हम लोग, देन माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब हम व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन, हम एक ही चीज को वापस 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 करें. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपको स्टार्टिंग में कैंडल गेजिंग मेडिटेशन बताया है ना. आप कैंडल को गेज कर रहे हो, देख रहे हो कुछ मिनट तक, जब तक आंखों में पानी नहीं आता, देन यू स्टॉप इट, एंड देन आफ्टर सम टाइम अगेन यू गेज, यू कंटिन्यू द सेम थिंग अगेन फॉर 3-4 टाइम्स. उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है. 3-4 बार बहुत हो गया, दैट इज सफिशिएंट नो. एक एक बार में आप 2-3 मिनट 4 मिनट तक करोगे, उसके बाद ब्रेक, फिर से 2-4 मिनट, फिर से 3-4 बार मैक्सिमम कीजिए, उससे ज्यादा नहीं करना. सो ये मेडिटेशन आप बार बार एक चीज करो. इफ यू आर डूइंग मंत्र मेडिटेशन, आप क्या कर रहे हो, बार बार सेम मंत्र, वट एवर मंत्र यू आर चैंटिंग, आप उस मंत्र को बार 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 बोल रहे हो. अगेन यू आर ब्रिंगिंग माइंड एंड पुटिंग इट इनटू लूप. आपने वो स्टोरी सुना होगा ना, एक आदमी है, वो चिराग होता है उसका, जिन चिराग को ये करता है, जिन निकलता है, और जिन क्या बोलता है उसको कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो. तो आदमी बोलता है मुझे मुझे बंगलो चाहिए. तो वो बोलता है मैं ला दूंगा बंगलो, लेकिन मुझे फटाक से दूसरा ऑर्डर भी कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि आई कैनॉट सिट आइडल, इफ आई एम आइडल आई विल किल यू. तो मुझे कुछ तो काम देते रहो. तो वो बोला ठीक है. तो बोले बंगलो बना दो. वो जिन ने फटाफट 10 मिनट में बंगलो बना दिया और वापस आ गया इसके पास. बोले जल्दी बताओ क्या करूँ क्या करूँ. तो बोले ये पूरा खेत है, इस खेत में पूरा सीड्स लगा दो. हाँ बोले डाल दिया. ओके जल्दी बताओ, उसमें पानी डाल. हाँ डाल दिया. अरे तुम ये घर साफ कर लो. कर लिया. और ये आदमी डर के, अब क्या दो इसको, अभी क्या काम दो, अभी क्या काम दो. ये आदमी टेंशन में आ गया. एंड देन ही रैन टू वन सेज. बोले क्या करूं क्या करूं, ये मुझे मार डालेगा, मुझे कोई काम नहीं देने के लिए. सेज ने बोला अरे इतना सिंपल है, वेट. उसने क्या किया, सेज ने एक सीढ़ी लगाया. ठीक है, सीढ़ी लगाया, और बोला उस जिन को बोलो इस सीढ़ी पे चढ़ो और उतरो. फिर से चढ़ो उतरो, ऐसे करते रहो जब तक मैं ना बोलूं तब तक. और उसने लगा दिया, जिन को बोला चढ़ो और उतरते रहो, चढ़ो और उतरते रहो. वो चढ़ा उतरा चढ़ो. ये उसने कहा, जब भी रिक्वायरमेंट है बोले रुको, हाँ, जाओ मेरे लिए वो बंगलो बना दो. हाँ चलो बंगलो बना दिया, वापिस चलो चढ़ो उतरो. सच अ सिंपल वे. सो यहाँ जिन क्या है, हमारा माइंड है, उसको किसी चीज में लगाना पड़ता है. और अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो दैट बिकम्स आवर सेकंड नेचर. And what I experienced after doing meditation is I became more aware, more into the movement, what we can say. We become aware of what we are speaking. We become aware of our thoughts. We can control actually our thoughts. Anger, there is time limit which increases. Like you get angry. It is not that those who meditate they don't get angry. They become angry, but then for them the anger, before it boils, the time limit is more. Like for example, ice है आपके पास नॉर्मल पानी है. नॉर्मल पानी को आपने बॉईल करने के लिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है. नॉर्मल पानी को आपने बॉईल करने के लिए रखा, तो कितना टाइम लगेगा उसको बॉईल होने के लिए. सपोज 2 मिनट लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट्स लगेगा. बट देन आपने अगर आइस आइस को, एकदम कोल्ड आइस है, फ्रोजन पूरा, उसको अगर रखा, उसको बॉईल करने के लिए रखा, सो इट विल टेक 5 to 10 minutes फॉर दैट आइस टू गेट बॉइल्ड टोटली. तो सोचिए, इफ यू डू मेडिटेशन, आपका ये टाइम है ना, ये बढ़ता है. आप नॉर्मल पानी से क्या बनते हो, आप आइस बनते हो. एंड देन एंगर तो आता है, बट देन वो एंगर का आप कन्वर्जन एक्चुअली उसमें होने के पहले आप आपके थॉट्स को, इमोशंस को समझते हो. क्योंकि डेली यू आर गोइंग इंटरनल, डेली यू आर फोकसिंग ऑन योर थॉट्स, डेली यू आर फोकसिंग ऑन योर माइंड. तो जो आता है थॉट्स, आप उस पर फोकस करें. आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, आपके खुद के थॉट्स पे, खुद के एक्शंस पे, किस पैटर्न में आपका माइंड चलता है, ये सब पे आप ध्यान देते हो बाय डूइंग मेडिटेशन. सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. और एक काउंसलर या टीचर, उसका सबसे मेन जो उसका गाइडेंस जो होता है स्टूडेंट्स को, वो दे सकता है, दैट इज मेडिटेशन, व्हाट ही कैन गिव. अब बाकी सारी चीजें जो भी देना है वो दे दो, लेकिन मेडिटेशन अगर आपके सारे बच्चे करते होंगे, आपको बहुत चेंज मिलेगा. एंड वन वेरी नाइस सजेशन व्हाट यू कैन डू इज, डेली इफ यू कैन हैव सम मेडिटेशन टाइम. ठीक है, आप यू आर ओपन टू लर्न मेडिटेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. वी विल आल्सो बी हैविंग अ कोर्स ऑन मेडिटेशन. बट देन आप जो भी मेडिटेशन करवाएंगे,
आपको डेली उतना फिक्स टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। या इफ यू गो टू स्कूल, यू आर अ स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर या एकेडमिक टीचर जो भी होंगे आप, तो आप एकेडमी या स्कूल में भी वो करवा सकते हैं। या फिर अगर आप कोई काउंसिलर है, पर्सनल 1-to-1 किसी को गाइड करते हैं, तो डेली आप क्या करवा सकते हैं, उस पर्सन को डेली 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ आवर, जो भी टाइम आप देते हैं पॉसिबल है सामने वाले से, डेली उतना समय डेली मेडिटेशन करने के लिए आप बोल सकते हैं। पहले कुछ दिन आपके साथ करवाइए और उसके बाद उसको डेली बोलिए, ही शुड टिक डेली कि मैंने किया कि नहीं किया। और नहीं किया तो आपने उस समय इमीडिएटली उसको कॉल करके बोलना चाहिए। अगर उसका मैसेज नहीं आया कि आज मेडिटेशन नहीं हुआ, इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि एक दिन नहीं किया तो माइंड का चांस है कि माइंड अगले दूसरे तीसरे दिन अगेन और ज्यादा हाई लेवल पे डिस्टर्ब करता है। उसी दिन उसको काट डालो, उसी दिन उसको वापस बोलना है नहीं किया, नहीं, वेरी बैड। इससे क्या होगा, आपके माइंड को चांस मिल जाएगा इधर उधर भागने के लिए। कंसिस्टेंट रहना है तो करना पड़ेगा, डू इट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब बच्चों को हम बोल रहे हैं ना, तो हमें अपने लाइफ में भी डेली करना पड़ेगा। फ्रॉम लास्ट 14 15 years I am daily doing around 2 hours of mantra meditation daily, fixed, without single days, missing, single day missing. And I actually have seen its effect in my life. I am totally different what I was earlier and what I am now. And now if I don't do meditation, I feel that I should commit suicide or I will die. But I cannot give up meditation. That is the effect of meditation if a person does. My mind is more spiritual because I am, by default, I am a spiritual personality in my personal life also. So mine is more spiritual, and my meditation is oriented towards God, attaining Him. सो मेडिटेशन का एक अगला वाला फायदा जो है ना, आप उस मेडिटेशन पे आप फोकस करते हो एक पर्सनालिटी पे, गॉड पे अगर आप फोकस करते हो तो आप उस पे ये कर सकते हो। इनडायरेक्टली मेडिटेशन का लास्ट लेवल तो वही होता है। बट देन हम जो यहाँ पे मेडिटेशन जो बात कर रहे हैं इस सत्र में, इस सेशन में, वो हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए या काउंसलर्स के लिए जो मेडिटेशन है। तो आप अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो, छोटे मोटे मेडिटेशन टेक्निक जो आपके पर्सनल लाइफ में डाल सकते हो। एंड इफ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, वॉट एवर रिलीजन यू हैव, डेली you should do some part of name chanting names of God, chanting mantras, whatever mantras you can. And what I told, you can try this also. What mantra I chant, Hare Krishna mantra, that is also very good. In Maharashtra especially आप देखेंगे गणपति के आरती के लास्ट में यही मंत्र होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इसी मंत्र का थोड़ा उल्टा है वो। व्हाट आई चैंट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस तरह। Om meditation is also very important. It is said in Vedas that God is in, Shabda, God is Parabrahma. The word for God is used is Parabrahma, and the word for Om is used as Shabda Brahma. So Om is considered to be, replica of God, we can say like that, in form of word. So Om in itself is very powerful. And when you chant mantra of some personality or some personality of Godhead, that means you want to develop connection with that person. Like for example, for me, Krishna. Okay, so I am chanting the mantra of Krishna to connect with Krishna. Similarly, so you can use the mantras for going ahead in your spiritual life. And if you want to just have peace of mind, mindfulness, focus on one thing, then you can have meditation for that also, no problem. When you want to go ahead, then you have to do it regular, you have to do it in front of God. But when you want to do it on the basis of regular mind control, then you can do meditations, whatever we discussed. Okay. So I think this was the basic thing about meditation, what we could discuss here. If you have any question, we'll take, or else we'll end our session here. I would like to tell that if you want to connect with me and have more sessions on spirituality, especially have sessions on Bhagavad Gita for different people, for students, for teachers, for parents, and I also do academic mentoring or help students focus on studies. So if you want to connect with me, you can take my mobile number, which is 7588189545. I will type in the chat box. If you want to ask any question or if you want to discuss anything, you are free to call me or message me. This is my mobile number 7588189545. आप मुझे कभी भी contact कर सकते हो. And if you launch more courses, I will be informing you. You can mail me at paravidyainstitute.com.
sorry, paravidyainstitute@gmail.com. Paravidya, Paravidya, Paravidya Institute @paravidyainstitute@gmail.com. ओके, तो आप इस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू. यस. एंड यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो विद द सेम नेम, Paravidya. uh, it is upcoming. I'll be putting more videos on that channel, so आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो. And if you have any query, anything, you can connect with me anytime, as this is the last session of our basics of spirituality. So I am giving all these details to you, and I thank once again to all of you for participating in all the sessions. And I also tell that meditation session what we had today, it was just the basic beginning of the meditation session, and I have tried to cover major points, so that even if somebody wants to implement, he can implement, and if somebody wants to know more, discuss more, then the future sessions will help him. So thank you very much. uh, Chat box. Okay, thank you very much. Hare Krishna.